at the United Nations by India over the issue of terror, a smarting Bilawal Bhutto today chose bile as his weapon of retaliation in a highly offensive tirade targeting the Prime Minister of India. Here is what he said. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama Bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. Now, the highly condemnable remarks came a day after India strongly hit back at Pakistan after it raised the Kashmir issue in the United Nations Security Council. India had asserted that a country that hosted Al-Qaeda terrorist Osama Bin Laden and attacked India's parliament does not have the credentials to sermonize on terror. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. India has now blasted Pakistan Foreign Minister for his extremely offensive and desperate tirade, calling it a new low even for Pakistan, for whom it is not new to be in denial. In an unequivocal condemnation, Ministry of External Affairs said a country that has been a repeat offender when it comes to genocides, violation of human rights and fomenting terrorists lacks the credentials to cast aspersions on India. पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। ओसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान में, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के। The statement by the Foreign Minister of Pakistan is indicative of not just a bankrupt nation, that is Pakistan, but bankruptcy of emotions and bankruptcy of intellect by the leaders who run that country. The country he represents has been incubating terrorism. So far as leadership of Prime Minister Modi is concerned, the world has recognized that leadership. Bharatiya Janata Yuva Morcha and the Bharatiya Janata Party condemns such irresponsible statements. Bilawal Bhutto must remember that his mother unfortunately was a victim of terrorism. And he must join hands with the world to fight against terrorism and not stand in support of terrorism. You heard Tejasvi Surya there. He was in fact present at a protest that was being staged by BJP workers outside Pakistan embassy in the national capital. People were angry over the insult of Indian Prime Minister, demanding an apology from Pak Foreign Minister. हमारे विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को नंगा किया है। बिलावल भुट्टो अपनी खींच उतार रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उनकी ओछी मानसिकता नजर आ रही है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने टेके थे। वो अपने हश्र ना भूले, उड़ी में हम उनको उनके घर में घुस के मार चुके हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हर भारतीय का अपमान है और हर भारतीय इसका बदला लेगा। देखिए,
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, दुनिया भर के लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री की निंदा कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान दूतावास के बाहर एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करें। देखिए, अगर प्यार से मांगे तो हम खीर देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, प्यार से हम मान जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेगा तो चाकू से बिलावल भुट्टो के बीच में से चीर देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, हम पाकिस्तान एम्बेसी पे जाके उनको चेताना चाहते हैं कि वो माफी मांगे। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान सरकार माफी मांगे हिंदुस्तान सरकार से, ये हमारी मांग है। What is going to be the reaction coming in from Pakistan? Times Now will be your one-stop shop for all the developments on this story. We take a very quick break on that note. Extreme weather.